question is blank are social inventions for the accomplishing the goals through group effort. Option A, management. Option B, organization. Option C, leadership. And option D, behavior. This is the right answer. मैसेज नहीं बोल के बताओ. मैसेज में आई एम नॉट एबल टू सी द मैसेज. यू हैव टू स्पीक आउट. मैनेजमेंट सर. ओके, क्या नाम था तुम्हारा? नाम भूल गया. लीडरशिप. प्रदीप है का ऑप्शन ए. बाकी अदर. Preeti, what is the right answer according to you? सर मेरे अकॉर्डिंग सी आएगा सर, लीडरशिप. Okay, Gaurav के according C. Yes sir, leadership. Sir, leadership. And organizing also. A social interest as a leadership. Okay, C. Preeti said C. Any other? Who else are there? Sir, behavior. Vaibhav said the behavior. Sir, Dipanshu. तो दीपांशु. Dipanshu. And Vaibhav? सर सी लीडरशिप. Okay, the answer of all of are you wrong. The right answer is the organization. Because the organization are the social invention for the accomplishing the goals through the group effort. So we achieve the goal in an organization. So organization क्या है? एक social invention है. The society have created it by achieve a common goal. That is the organization. तो organization behavior हम पढ़ रहे हैं, तो organization इसमें obviously कि organization एक social invention है. Society ने एक इंसान ने बनाया हुआ एक जो उसको organization बोलते हैं. So organization as a social invention for accomplishing the goals through the group effort. So सबके 0-0-0 मार्क्स थे. Next चलते हैं. Which of the following are the key features of organization? Option A, social invention. Option B, accomplishing goals. Option C, group effort. Option D, all of these. ऑल ऑफ दिस सर. Sir, D. सर बी. नाम के साथ ऑप्शन बोला करो. आपका नाम और ऑप्शन. सर वैभव. बोलो वन. ऑप्शन बी. हाँ, ऑप्शन बी. यस सर. ओके, नेक्स्ट. Sir, Dipanshu. Option D. Sir, D. ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी. Sir, C भी होता है ऑप्शन कंडीशन. डी. सर लाइक ग्रुप एफर्ट्स भी तो होता है ना, जो कि एम्प्लिशिंग गोल्स तो हम जब करेंगे ना, जब हमारे ग्रुप एफर्ट्स होंगे. That's the question, Preeti. You have to give the right answer. Sir, all of these. Okay, Preeti said the D option. Any other? सर ऑप्शन डी. Naam? गौरव. Gaurav said the option D. Okay, the right answer is D because we all are the feature of an organization. मैंने features करवाए थे. What are the main features of organization? तो ये सारे features थे. Organization is social invention. Organization is ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था कि organization में क्या करते हैं? एक goal achieve करते हैं. Then accomplishing goals. Then this is a group effort. तो इस पर आया था हमारा एक group effort है. तो सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हैं. So the right answer is all of these. Okay. Now proceed to next question. A study of the human behavior in organizational setting is option A, individual behavior. Option B, group behavior. Option C, organizational behavior. Option D, none of these.
डी सर। सुना नहीं कौन क्या बोल रहा था। ऑप्शन डी किसने बोला? मैंने बोला। प्रदीप। ओके, प्रदीप said D. Any other? सर आई थिंक सर ऑप्शन ए आएगा ऑप्शन सर। सी। ऑप्शन सी। कौन बोला ऑप्शन सी? सर दीपांशु। 5 ऑप्शन सी। Any other? सर वैभव। सर वैभव ऑप्शन सी। वैभव ऑप्शन सी। सर गौरव ऑप्शन ए। गौरव ऑप्शन ए। प्रीति? बोलो प्रीति। Sir, just a second. It's not the time of Google. प्रीति? नहीं सर। सर मे बी सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हो सकता है। हर क्वेश्चन में आप ऐसे बोलते हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की हो सकती है, बट वी हैव टू गिव द राइट आंसर इन एनी एग्जाम। सर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओके, द ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू प्रीति। एंड ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और किसने बताया था? सर मैंने। सर वैभव ने। ओके, दीपांशु तो ने। आंसर सी इज द राइट आंसर, द ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। ओके, बिकॉज़ वी स्टडी द human behavior in an organization setting is called the organizational behavior. Organization और behavior दोनों की बात हो रही है, obviously it is the organization behavior. Fourth, scientific management approach is developed by ELTON, MAYO, Henry FAYOL, F.W. Taylor and D.A. MASLOW. D है अब्राहम मैस्लो, A मैस्लो मतलब अब्राहम मैस्लो। Who given the scientific management? ऑप्शन सी गौरव। गौरव ऑप्शन सी। यहाँ सर पे वैभव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी F.W. टेलर। प्रीति said ऑप्शन सी। Any other? Pradeep? This is the right answer according to Pradeep. Okay, the time hour. तो लॉक कर दिया जाए। So the right answer is C, because F.W. Taylor is the founder and given the scientific management approach. यस सर। Next, who proposed the bureaucratic structure is suitable for all organizations? ELTON, MAYO, Henry FAYOL, F.W. Taylor, Max Weber. Your time start now. You have only 15 seconds. B कौन बोला? सर मैक्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन बोला? सर दीपांशु। दीपांशु ऑप्शन डी। सर वैभव ऑप्शन डी। वैभव ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी सर गौरव। सर ऑप्शन डी। Option D. So now time hour. The right answer is option D. Max Weber is given the bureaucratic approach. Okay. So जो honesty से जो गलत बता रहे हैं मेरे लिए वो भी सही है, लेकिन जो गूगल करके जो बता रहा है वो सही भी हो के गलत है बहुत, ये ध्यान रखें।
जो ट्राई करते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं इसको। एक तो गूगल करके उस दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ता उस चीज गूगल करते हो तो योर माइंड विल नॉट डेवलप whatever you want to learn. Yes, It sir. only gives you some moment, some happiness for a few moments. But when you will try to brainstorming and think over and give the answer honestly, it will create a long time memory. See where you was wrong and what was the right answer. It will create a long term memory in your mind. Okay, next is the HAWTHRONE experiment, which was a real beginning of applied research in organized behavior, was conducted by option A. ELTON MAYO, B. Henry FAYOL, C. F.W. Taylor, D. Max Weber. So it is very popular HAWTHRONE experiment. Totally management is based on the HAWTHRONE experiment. This is the beginning of the management. Sir, option A, Gaurav. Gaurav, option A. Sir, option A, ELTON MAYO. B, C, option E. Only 2 seconds remaining. 1, 2. लॉक कर दिया जाए. So the right answer is A. ELTON MAYO is experiment, a HAWTHRONE experiment in the company HAWTHRONE. A company named was HAWTHRONE. HAWTHRONE, he studied on the labels and collected data from the labels and completed the study. That's why it's called the HAWTHRONE experiment. So he studied the behavior of the employee in HAWTHRONE company. It is founded by the ELTON MAYO. Today's organizations are option A, open system, option B, closed system, option C, open as well as closed, option D, none of these. One, two, three, Option C, sir. 4. Gaurav. Option C. Okay, as per Gaurav, option C. Sir, C. Option C, as according to C. Any other? कोई और बोलना चाहता है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और कोई बताना चाह रहा है? कोई आंसर देना चाहेगा कोई? सिर्फ 2 या 3 आंसर दे रहे, बाकी के तो यूं ही बैठे हैं. हेलो यस, सर सॉरी सर, एक बार बेल बज गई सर, बाहर जाना पड़ गया, घर पे कुछ था नहीं, सॉरी सर. क्या? सर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था ना अभी आपकी आवाज़ का, सर बाहर जाना पड़ गया था, 1 मिनट अभी रूम में आया हूँ सर, सॉरी सर.
ओके तो आप आंसर दोगे? हाँ? बताओ क्या हो सकता है? सर वैभव, सी ऑप्शन। Okay, the right answer is so. C, the open as well as closed. The two stage organization are open as well as closed. Mark नहीं हो रहा है इसलिए मैं एक बार PDF खोलता हूँ. Now the next question is, which organization theories can be understood by if and then relationship? Option A, system approach. Option B, contingency approach. Option C, process approach. Option D, scientific approach. Which organized theory can understand by if and then relationship? We can see the cause and effect relationship. Sir, I think option C, sir. Gaurav. Okay, as per according Gaurav, the option C is the right answer. And according to Preeti, according to Dipanshu, according to Vaibhav, according to Pradeep. Tell me. You must participate and give the answer as soon as possible so that we can proceed to next question. The maximum question we can cover. Okay, nobody want to give the answer. Let's start. So the right answer is, for that there is a contingency approach, right? Okay. Next is the organizational behavior is an interdisciplinary approach, B, humanistic approach, C, total system approach, and D, all of these. Sir, option B. Gaurav. Option B. Gaurav said the option B. Why are you not replying? If you are not participating, you can leave. If you are not interested. Okay, so next is the organized behavior is not Yes, sir. and a separate field of study. B, applied science, and not a normative science, and not a pessimistic science approach, which is right. B है sir. Sir. Sir, option Yes, sir. B. B. Yes, sir. वैभव, option B. Above B. सर ये नॉर्मेटिक साइंस और पैसमेटिक साइन अप्रोच का मतलब बता. नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है कि पहले बाद में बताऊं, पहले आंसर बताओ. Sir, Sir, option D. सर इसका मतलब पता होगा तभी तो बताएंगे. मतलब बता दिया तो सब कुछ हो जाएगा. सर तभी तो. Right option is B. I also think B. Apply. Sir, option D, sir. Okay, the right answer is D, pessimistic approach. तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है कि नॉर्मेटिव साइंस इज a type of the information that is developed, presented or interpreted based on the assumption. It totally based on the assumption. Usually unstated. We are not clear about the thing. It is unstated, not said by anybody. So it is assumed, totally assumed. Yeah? And preferences for a particular outcome, policy or class of policies or outcomes. It is totally based on outcome, no, and totally assumption. On the basis of assumption, we can say it is totally based on the hypothesis. And pessimistic approach, pessimistic क्या होता है? Pessimistic क्या होता है? Pessimist नहीं पता तुम्हें? नहीं पता. निराशावादी, ठीक है, निराशावादी होता है पेसिमिस्टिक. There is negative hope.
Okay, so the right answer is pessimistic approach. Organization not an pessimistic approach because it gives a positive vibe in any human as well as in industry or organization or company. The next is the cognitive theories of learning was given by who given the cognitive theory? Skinner, Sir, option D, sir. Pavlov, Tolman, Sir, option D. Piaget. Option D, sir. Option D. Yes, sir. Option D, Vaibhav. B. Sure? Yes, sir. Piaget. ये J नहीं है, G आएगा यहाँ पे. Piaget है. Piaget है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी का कहना है वैभव का, गौरव का और सर दीपांशु का. दीपांशु का. Okay. But the right answer is C. Tolman given the cognitive theory. सर कौन सा है? टोलमैन आएगा. सी इज द राइट आंसर. थ्योरीज मैंने जो करवाई थी लर्निंग की दोबारा से पढ़ लेना. ये जो स्किनर है, पावलोव है, पाइगट है, इन्होंने साइकोएनालिटिक और लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी. पावलोव ने लर्निंग थ्योरी दी थी, ठीक है, जो डोग वाली मैंने करवाई थी वो. पियागेट ने भी वही दी थी जो कोग्निटिव अप्रोच वाली ना, क्या नाम है, साइकोएनालिटिक थ्योरी. तो वो थ्योरीज में लर्निंग वाली दोबारा पढ़ लेना. 14 है एक्सटेंशन ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन इनटू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड. अगर बिहेवियर if there is a modification in the behavior into organization, this is called enrichment, enlargement, OB mode, OB exit. If there is some extension in the behavior modification, then the behavior is modified at a extension level into organization. The behavior is modified at large level in an organization, which is called Sir, option C, sir. okay. Gaurav said option C. Yes, sir. Option C. Sir, Vaibhav. Option Said option C. Sir, Vaibhav. Option A. Option क्या है? A, sir. Apple. Option A, enrichment. Any other? C. अच्छा. देखो खोल के देखियो. C said. C किसने बोला? C किसने बोला? मैंने बोला सर, मैंने. ओके. C प्रदीप, प्रीति, गौरव सर. गौरव. A किसने बोला? सर वैभव A ने. किसने बोला? So the right answer for this is C. OB mode. उसको OB mode बोलते हैं, जो भी modify होता है organization में. सर हाँ. सर आप ये जवाब सही जवाब पे सर पैसे पूसे भी दे रहे होगा. कौन बनेगा करोड़पति वाला सिस्टम कर रखा है. हाँ तो मैं तो जरूर मिलेगा. मार्क्स मिलेगा. अच्छा ठीक है सर. और जो गूगल कर रहा है, मेरे को पता है कौन कौन कर रहा है, उनको नहीं मिलेंगे. सर ठीक है. अब ज्यादा टाइम दूंगा ही नहीं, फटाफट पूछूंगा. ऑप्शन 15 is a relatively permanent change in the behavior that occurs as a result of the experience, behavior modification, motivation, learning and skills. इसने अच्छी क्लास लगाई है लर्निंग वाली. बता सर लर्निंग. सर लर्निंग. Okay, the right answer is learning. 16. Which of the following is an included as structure of human mind? Heat, ego, superego, ego, all of the above.
ईगो हेलो सर वेब हेलो ईगो Sir, ego. ego, Okay, the right answer is all of the above. above Clear? Because we include all structure of the human mind. The human mind is divided in the all structure: id, ego, and superego. There is a pre-conscious, unconscious, and conscious. Three stages are the moving in the stage of the id, ego, and superego. Next. Blank is largely childish, irrational, never satisfied, demanding, and destructive of others. This is ego, negative ego, superego, or id. negative So ego. now. Sir, negative ego. Sir, negative ego. Option C. sir. नेगेटिव ईगो Okay, but the right answer is D, id. हुआ Next, सर blank represents the noblest thought ideals. It's ego, negative ego, superego, or id. सर सुपर ईगो Sir, super ego. Okay, that is the right answer, superego. 19. Blank is reality and the practical oriented part of thinking. Ego, negative Ego. ego, superego, id. Ego. Right answer is ego. 20. Thematic appreciation test is designed to understand perception of individual, learning of individual, personality of individual, none of these. Sir, B. बी ऑप्शन सर पर्सनालिटी ऑफ कौन इंडिविजुअल ओके, कौन कौन बोला बी? सर गौरव Sir, personality. गौरव, प्रीति, एनी अदर? Sir, Dipanshu ने दीपांशु, B. बी, सी सर प्रदीप, सी। ओके, द राइट आंसर इज सी। ठीक है, प्रदीप ने अच्छे से क्लास लगाई थी, अच्छे से पढ़ा था, इसलिए पता है इसको लर्निंग वाला। ठीक है, थेमेटिक जो टेस्ट अप्रोच है, जो टेस्ट करते हैं हमें को पर्सनालिटी के ऊपर करते हैं, किसी इंडिविजुअल की लर्निंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाउ दे लर्न, नॉलेज कितनी मिली उसको पढ़ने के बाद, क्या लर्निंग उसकी सक्सेसफुल रही, तो हम थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट उसका करते हैं। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन थे, बाकी हम कल करेंगे। तो अच्छे से आंसर दिए तुमने सबने, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी से देने हैं, मैक्सिमम की कोशिश करनी है। तो इट विल इंक्रीज आवर लर्निंग टू ट्राई टू गिव द आंसर इन आवर ओन वे।